If you want to change your life in 1 week, it starts with your vocabulary. Change your vocabulary for yourself and change your life. So, as you know, guys, I've been learning a lot of things in the last 2 months, specifically went for Tony Robbins event in the UK, then went to the Dave session to learn about relationships, then went for a 4 day meditation course, and there have been a lot of learnings. I was listening to one of these gurus, and this guru said, um, he said, मैं ना बहुत खुश रहता हूँ, मैं ना बहुत प्रसन्न रहता हूँ. And we were like listening to him, and we were like in the spiritual course. मैं बहुत प्रसन्न हूँ. Okay, all right. He said, तुम जानते हो मैं क्यों प्रसन्न नहीं हूँ? प्रसन्न क्यों हूँ मैं? He was like, मैंने ना आज तक कभी वो नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था. And you were like, okay, all right. And then he said, दुनिया में ना बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वो करते हैं जो उन्हें करना चाहिए, प्लस वो भी करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए. एंड ही सेड, मैं बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि मैं वो नहीं करता जो मुझे नहीं करना चाहिए. एंड आई लाइक, ओके, बिकॉज वी कुड रिलेट इट, आई कुड रिलेट इट लाइक दैट, बिकॉज हम लोग भी लाइफ में बहुत चीजें ऐसे करते हैं हमें करनी चाहिए, और बहुत चीजें ऐसी भी करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए. एंड दैट बेसिकली हम लोग 4 कदम आगे बढ़ते हैं और 3 कदम पीछे आ जाते हैं, और कम समटाइम्स 5 कदम पीछे चले जाते हैं. तो वी इवेंचुअली मेक नो प्रोग्रेस बिकॉज वी कीप डूइंग थिंग्स दैट वी शुड नॉट बी डूइंग एज वेल. एंड यू विल एक्चुअली, एंड ही सेड, लोगों को ना पीपल गेट रिग्रेट, क्या रिग्रेट है हमारे इस चीज का, इस चीज से बहुत दुख है. पीपल गेट रिग्रेट, दुख तब आता है जब आप वो करते हो जो आपको नहीं करना चाहिए. सो रिग्रेट आने का सबसे बड़ा कारण होता है when you are doing things which you should not have been doing. Like, okay, yes. And whenever you're doing something ना which you should not be doing, आपको एक मैसेज आएगा बीच में, अरे मत करे, सही नहीं है. And we ignore that thing. अबे नहीं ना, करने मजा आ रहा है. So you know what he said? He said, we have 5 senses. Okay, we have 5 senses. We have this bliss sense, eyesight, and smell, and taste, and touch. We have 5 senses. कहते जब हमारा सेंसेस विल कंट्रोल आवर माइंड, दैट मीन्स आप एक गुलाम हो. फॉर एग्जाम्पल, यू आर ईटिंग और खाए जा रहे हो, मन बोल रहा है पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा, तो बंदा खाए जा रहा है क्योंकि मन जो है ना आपके टेस्ट सेंस का गुलाम बन गया है. डूइंग योर, जब आपके सेंसेस विल ओवर पावर योर मन, ओवर पावर योर माइंड, तो आप स्लेव हो. Whereas when your mind is controlling your senses, तो आप मास्टर हो. लाइक, ओके, सो सेंसेस को ना अपने ऊपर हावी मत होने दो. वो कहते हैं जिस बंदे ने अपनी इंद्रियां कंट्रोल कर, इंद्रियां मीन सेंसेस, जिस बंदे ने इंद्रियां कंट्रोल कर ली ना, वो he or she has mastered his or her life. So this was excellent learning for me of not doing things which you should not be doing, and don't become a slave of your senses. सेंसेस क्या है? कुछ कुछ देख रहे हैं तो देखे जा रहे हैं, नेटफ्लिक्स से बैठे हैं देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, बिंज वॉचिंग वॉचिंग चल रही है, 1 घंटा 2 घंटा 8 घंटा. पता है ये गलत है, सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना है, बट सेंसेस ने क्या किया, आंखों ने क्या किया, कंट्रोल कर लिया तुम्हारे दिमाग को. तो तुम क्या बन गए? स्लेव. खाए जा रहे हो, टेस्ट ने कंट्रोल कर लिया आपके दिमाग को. कुछ गलत कर रहे हो, सुन रहे हो कुछ उल्टा सुन रहे हो, नहीं सुनना चाहिए यार, ये चीज नहीं सुननी चाहिए. नेगेटिविटी इज इम्पैक्टिंग मी. वी नो हमें ये चीज नहीं सुननी चाहिए यार, बट मजा आ रहा सुनने में बहुत. अरे आगे और क्या हुआ, और बता. अरे और क्या हुआ, चुगली कर रहे हैं किसी की, और बता क्या हुआ. इट्स नॉट हेल्पिंग यू, बट योर सेंसेस हैव ओवरपावर्ड योर इंटेलिजेंस एंड यू बिकम अ स्लेव. जहां पे उल्टा हो गया वहां पे आप मास्टर बन गए. तो कभी भी ऐसा हो रहा हो ना, तो ये जस्ट रिमेंबर दैट यू बिकमिंग अ स्लेव. एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पीपल वांट इन लाइफ इज फ्रीडम. So you don't want to be a slave even of your own self. You forget about somebody else. This is one learning I truly relished. Second learning I want to share with you, for example. So I have learned this mantra called How Wonderful. Anything which does not happen according to you,
Just say how wonderful. How wonderful क्या है? It's an antidote. कुछ भी गलत हो रहा हो, say how wonderful, and it immediately changes your state of mind, and then you will react differently. So this actually, this is an extension of what I learned from Tony Robbins. Tony Robbins says there's something called TV. TV means transformational vocabulary. So पता they did a survey in the jail. जेल में गए ये लोग, और जेल में क्या होता है ना, प्रिजनर्स की ना एक पर्टिकुलर वोकैबुलरी होती है. Prisoners or people who are not doing good in life, they use particular vocabulary. उनकी vocabulary बहुत limited होती है. People who use limited vocabulary, कि limited vocabulary मतलब अरे चीजें बहुत डिफिकल्ट है यार, अरे मैं थक गया यार, अरे you know what, I have a lot of rage and anger for him. Negative vocabulary, limited vocabulary, people who use for themselves will never grow in life, and are very highly likelihood of they committing crimes. मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है ना, आप किसी आस्क अ मर्डर, अब तूने मर्डर कैसे कर दिया? पता नहीं यार, हो गया. पता नहीं यार, हो गया. तो क्या हुआ? His sense overpowered his brain for a short period of time, and he became a slave of his mind. Anger, rage, and he was like, I'm mad at you. People use this word a lot. I'm in relationships, people use this word, I'm mad at you. Moment you say I'm mad at you, even though कोई छोटी सी बात थी, you start becoming mad at that person, and then you will do things which mad people will do. So from now onwards, use TV. TV means transformational vocabulary. It's Tony Robbins learning. कुछ भी नेगेटिव बोलने का मन करे ना, जैसे कि अरे यार what a long day I had. Instead of saying that what a long day I had, I'm tired, I'm feeling so refreshed. Just change it. Even though you're feeling dead tired, just try changing those words, just the words, to something positive. I'm feeling so refreshed. Maybe it's a sarcastic way of change your negative words, limiting words. मैं थक गया, लंबा दिन, long day. I'm so mad at you. This is prisoners, poor people, mediocre people. Ask them, hey, how are you? I'm okay. I'm doing okay. You know, things are not as per the way they should be. Limited vocabulary, negative vocabulary they use for themselves, and therefore they're never able to grow. I am okay. No, don't say I'm okay. Say I'm great. I have never been like this before. Just say it, and it will transform your energies instantaneously. I've paid lakhs to learn this, guys, okay? Trust me. And I've traveled multiple countries to learn this. I'm giving it to you. And if you still do not, if you still are not mindful of this transformational vocabulary, how wonderful, and the concept of वो मत करो जो मुझे नहीं करना चाहिए, अपने इंद्रियों का slave मत बनो. These 3 or 4 things, if you want to change your life in 1 week, it starts with your vocabulary. Change your vocabulary for yourself and change your life. Change the words that you use for yourself. I'm weak, I'm not strong, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, I'm not good enough, I can't speak good English, मैं थक जाता हूँ, थक गई, थक गया, my boss is an idiot, he gives too much lecture. कुछ just change your words and change your life. Change your vocabulary, transform your vocabulary for yourself and for others as well. So, golden pieces of knowledge. It's not just knowledge, it's pure wisdom. Yes, निकली हुई है वो wisdom which can be used, like इसको भी अगर implement कोई नहीं करता ना, next time I hear somebody, I'm so tired, man. How are you? Okay, I'm okay. How was the weekend? Yeah, it was okay. Yeah, yeah, yeah. All right. Please use it. This life transforming, trust me. Okay. Thank you so much. God bless. Bye.